Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Okay. So, we are now in session 27. We have finished our main study of words, but some kind of words still remain to handle, and one of them is compound words. So, just read out the first two lines. Afternoon, airport, backbone, bedroom, blackboard, bookshelf, brainwash, candlestick, carefree, classmate. Meanings are all known, very simple. Commonplace, cross check, deadlock, doorknob, earthquake, everything, eyesight, fingerprint, firework, football. Good. Forward, grandfather, grassland, graveyard, haircut, headache, Headache. inkpot, jackfruit, keyboard, lifetime, limestone. Okay. Moonlight, nearby, newspaper, nightfall, notebook, overcome, paperweight, passport, quarrelsome, railway, rainbow. Okay. Schoolboy, seashore, setback, sunshine, textbook, toothpaste, throw away, underground, uppermost, viewpoint, watchman, waterproof, weekend, widespread, yourself. Forward. You people know forward. What is forward? Forward. Preface kind of thing. Okay. So, that is forward, the word which goes before the book or at the starting of the book. Okay. Yeah. What I want to point out particularly in this is that when you write these words, you write them together without hyphen. Okay. Many people make the mistake here, they write back separately and bone separately, and that is not backbone. Okay. So, be careful on this. Maybe let us try this exercise quickly and orally. Try replacing some groups of words from here with some suitable compound words. How will you rewrite this sentence by that? Her eyesight is perfect. Her eyesight is perfect. Okay. So, vision of her eyes is her eyesight. Okay. Here, big backpack. Okay. Fine. Next, this one. Yeah, planning a party around the weekend. Around the weekend. This one, The stalls on the roadside sold local. you can as well say the roadside stalls. Okay. Next, final. He has some experience of controlling a campfire. 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 Okay. So, such things you can do. Okay. We have till now seen quite a few collections of verbs. Yet another collection is here. Yes. Absorb, acute, Acquit. Okay. advance. Here, so far as verbs are concerned, we wanted to ensure that everybody knows the meaning. Absorb, you know the meaning. Acquit, what is meaning of acquit? Exonerate, beautiful. To release from a charge. Okay. So, if you are accused,
and then you establish your innocence, then you are acquitted. Okay? Advance. मतलब verb. Move forward. Move forward, yes, in space or in time. Okay? Apply. Apply, everybody knows almost. Bide. Bide is actually almost archaic, except in idiomatic use. To bide one's time means to look for a suitable opportunity. Blame. Blame, पता है? Bloom. Bloom, Boost. boost, बढ़ा देना, ठीक है? To increase. Brood. What is the meaning? Think seriously. Good. Buckle. Buckle. To put a fastener also, to fasten something, that is also buckle. You buckle your shoes. Okay, 1, 2, buckle my shoe. Okay, and otherwise, buckle is to bend or warp under pressure. Okay, Bungle. bungle, fine. बिगाड़ लेना, गड़बड़ा लेना. Change. Okay, Choke. choke, to stop supply of something. Suffocate, yes. Okay, continue. Choose. Okay, Cobble. cobble means to do some leather work. Okay, Confirm. okay. Confirm, everybody knows. To निश्चित करना, ठीक है? Confirm. Conquer. Okay, जीतना. Consist. Consist. Convict. Convict. What is convict? Charge guilty. Who is sentenced as guilty? Cook. You know. Cope. Cope मतलब To face. मैनेज करना. हाँ, मतलब कि कोई मुश्किल हालत को मैनेज करना, ठीक है? Crave. And Too long. to long for something, yes. Cure. चाहना, बुरी तरह से चाहना, ठीक है? Cure, ठीक है? ठीक ठाक करना. Typically with disease. Defer. Postpone. Denote. Denote. Highlight. Not highlight. To mark. To represent. To represent. Let x denote this variable. Okay. Depend. मतलब निर्भर होना, ठीक? Deter. डेटर. Deter. डेटर मतलब रोकना. कोई गड़बड़ काम तुम करने जा रहे हो, हम तुमको डेटर कर सकते हैं. Dine. डाइन मतलब बिस्किट खाएंगे तो उसको डाइन बोलेंगे नहीं, ठीक है? अब किसी का बिस्किट ही अगर खाना हो तो फिर चलेगा. डिसमिस, Dismiss. छोड़ देना, रिलीज कर देना. और अक्सर नेगेटिव कॉनोटेशन है इसका कि नौकरी से निकाल दिया गया, या जो है कोई मीटिंग थी, मीटिंग में बैठे हुए थे, बोले कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, ठीक है? Drive. ड्राइव नहीं है, ये डाइव है. Dive. मतलब गोता लगाना, ठीक है? Dope. डोप मतलब टू मिक्स, यस, मिलावट करना. Dote. डोट मतलब डोट. To express extreme affection as a matter of habit. She dotes on her son. The teacher always dotes on this particular student. Okay? Doze. मतलब not exactly sleep. Sleep is more respectable. Nap also is respectable enough. ऊँघना, as if you are illegally sleeping, you know. You are supposed to study or you are supposed to listen to a lecture and then you do this, like this. So that is you are dozing. Okay. Next. Drive. Drive. Drive मतलब हिंदी करेंगे तो क्या बोलेंगे? चला. चलाना या गाड़ी को चलाना, बिल्ली को भगाना, ठीक है?
emerge, emerge मतलब to come out, to come out, yes. fade, Fade, diminish, yes. Diminish is a good close point. Fake. So fake, not real, you are talking about the adjective meaning. to pretend, Fake, that's a good one. He is saying feign, FEIGN. Okay, fake, कोई नकली माल असली के नाम से चलाने की कोशिश करना, fondle, मतलब दुलार करना. Not coax. Coax is if you are trying to urge somebody to do something, okay, and fondle is just dular karna, okay. A caress lovingly, yes. form, Form, make, to make, yes. fumble, Fumble, okay. Haglana type का, actually to get hold of something clumsily, to get hold of something clumsily. For example, if I try to hold this pen and then say like this, okay, then I will be fumbling. Sometimes you also fumble for a suitable word, okay. I am trying to ensure that you don't do that. gaze, Gaze मतलब stare intently, एकटक देखना. light, Glide मतलब to move smoothly, not necessarily sudden, okay. gobble, There is a difference between slide and glide. In slide, there may be effort, there may be resistance. In glide, there is very little resistance, very little effort involved, frictionless, okay. Gobble, bhakozna, yes, eat voraciously. grope, ग्रोप, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करना, ग्रिप करने की कोशिश करना, वो भी ढीला डाला, ठीक है. गजल, गजल, जो चीज तुम सॉलिड के साथ गॉबल करते हो, लिक्विड के साथ गजल करोगे, ठीक है. देयर आर सम पीपल हु गजल a lot of tea, coffee. Some people do worse, they guzzle a lot of more dangerous liquids, okay. hamper, मतलब नुकसान पहुंचाना, हैम्पर, hinder, बाधा पहुंचाना, hire, मतलब किराए पे लेना हो सकता है या रिक्रूट करना भी हो सकता है, ओके. टू रिक्रूट और टू टेक ऑन रेंट, फाइन. Everybody knows, everybody has, I hope. hurry, जल्दबाजी करना, हड़बड़ाना, impress, मतलब नो नो नो, इम्प्रेस इज नॉट खुश होना. इम्प्रेस इज टू मेक ए मार्क ऑन, ओके. दबाव डाला, प्रेस किया, उससे एक निशान बना, तो इम्प्रेस हुआ. मैंने कुछ इतना सुंदर सा बताया कि आप सारे लोग बोले कि अरे वाह, ये तो जबरदस्त है. सो आई इम्प्रेस्ड यू, ओके. jumble, जंबल, ऑर्डर बिगाड़ देना, अरेंजमेंट बिगाड़ देना. lure, Entice, yes, entice is a very good meaning, okay. manage, मैनेज तो सब कोई जानता है, सब मैनेज करते हैं. मर्ज, मिलाना या मिलना, ठीक है. दो स्टेट मर्ज करके एक स्टेट बन सकते हैं, और सेंटर की तरफ से दो स्टेट को मर्ज करवाया भी जा सकता है, ठीक है. सो एक केस में बिना ऑब्जेक्ट का वर्ब होगा, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट लेकर होगा. o, ओ, उधार रखना. आई ओ यू 10 रुपीज़, मतलब कि तुम्हारा 10 रुपये मेरे पास है जो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, होपफुली. postpone, मतलब टालना, या हाँ मेरा डेट पीछे करना ढंग से भी कर सकते हैं, अनाउंस करके. prefer, प्रेफर, advice, नहीं 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 नहीं. हाँ, टू चूज समथिंग रादर देन समथिंग एल्स, ओके. प्रूव, साबित करना. कोट, किसी की बात को एज इट इज बताना, कि महात्मा गांधी ने कहा था, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो कहा था, दो सेंटेंस वो लगातार वैसे को वैसे बता दिया गया. दैट इज टू कोट,
Okay, and the corresponding thing which I am saying is called quotation. Okay, reduce, मतलब घटाना, कम करना. Yes, आगे refer, refer, allude. Yes, to allude, बताना कि ये चीज आपको फलाना डिक्शनरी में मिलेगा. ठीक है, तो फलाना डिक्शनरी को रेफर किया गया. reform, रिफॉर्म मतलब सुधार करना. regard, टू चेंज टुवर्ड्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन. यस, रिगार्ड regard, मतलब इज्जत करना, टू रेस्पेक्ट और टू कंसिडर. ओके, reject, खारिज करना. remark, रिमार्क, ओ रिमार्क मतलब पॉइंट आउट करना. report, रिपोर्ट खबर देना. retire, रिटायर मतलब no, retire means from active position to come back. Okay, so at old age we typically retire from our job. In railway station, after reaching the place we retire to the retiring room. Okay, we are tired. Okay, so we retire. So first we are tired, then we retire. Okay, retreat, retreat, subside, withdraw. Withdraw not something but oneself. Okay, पीछे हटना, retreat. ride, राइड मतलब सवारी करना. किस चीज का? घोड़े का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का. ठीक है, scare, स्केयर डराना, बुरी तरह से डराना. ओके, scrape, स्क्रेप किसी बर्तन टाइप की चीज से या मेटालिक सरफेस से कुछ खरोंच के निकालना, दैट इज स्क्रेप. state, oh, settle, सेटल मतलब मतलब कि ठीक ठाक कर देना, टू कम टू एन एग्रीमेंट और टू रीच द बॉटम ऑफ सम प्लेस. ओके, shuttle, शटल टू मूव टू एंड फ्रो, इधर से उधर, उधर से इधर. ठीक है, जैसा शटल कॉक करता है. skate, मतलब टू ग्लाइड ऑन ए सरफेस. slide, Slide is just to move relative to something over a surface. smuggle, चोरी चोरी कोई सामान ले आना. snore, Snore खर्राटे लेना. खर्राटे. ओके, टू मेक ए nasal sound during sleeping. soothe, सूद आराम देना. yes. spare, Spare release, to release. state, बताना, steal, everybody knows. चोरी करना. stoop stoop, मतलब झुक जाना. ठीक है, strangle, strangle yes, गला दबा देना. asphyxiate, stroke, stroke थपकी देना. struggle, struggle संघर्ष करना. submit, जमा करना, निवेदन करना. supply, supply as in response to a demand. Okay, fuel, swear शपथ लेना या गाली देना. yes, yes. tackle, निपटना, tally, निशान लगा देना कि हाँ हो गया, गिनती करते हुए निशान लगाते जाना. दैट इज टैली. tire, टायर मतलब थकना. मेनी पीपल थिंक सो, थकना, लेकिन एक्चुअली टायर इज नॉट थकना, टायर इज थकाना. बिकॉज यू से आई एम टायर्ड. ओके, यू नेवर से आई टायर्ड, आई टायर्ड. ओके, आई एम टायर्ड. सो हाँ, सो कोई काम है जो कि थका देता है. इट इज अ टायरिंग जॉब. हिज स्टेटमेंट इज राइट. सो द जॉब टायर्स समबडी. सो ये बड़ा अजीब वर्ड है. एक्चुअली टायर का मतलब होता है थकाना. ट्यून tune, धुन किसी चीज वो की, तो music, नाउन है. धुन इज नाउन. ओके,
फ्रीक्वेंसी ठीक करना है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मैच करना है या फ्रीक्वेंसी ठीक करना है, या पिच साउंड का जो है साउंड का पिच को एडजस्ट करना है, ठीक ठाक करना है. अर्ज, रिक्वेस्ट स्ट्रांगली. ओके, टू रिक्वेस्ट स्ट्रांगली, उसको खास तौर पर प्लीज करो ना. Very. वेरी, बदलना. Wave. Wave, to and fro motion करना. Okay, so it can be like this or it can be like this. Okay, it has a connection with wave, तरंग. Wipe. पोछना. Woo. वो मतलब किसी को मनाना, खास तौर पर शादी के लिए. ठीक है, पटाना एक्चुअली. Worry. वरी मतलब चिंता करना. चिंता करना. यस. Zoom. जूम, तेजी से पास आ जाना, अक्सर साउंड के साथ. लेकिन आपके स्क्रीन में जब कोई सीन जूम होता है तो साउंड ना भी हो सकता है. आप स्क्रीन को जूम करते हैं ना, सो दैट जस्ट कम्स क्लोज टू यू. इन इफेक्ट इट एक्चुअली increases in size. Okay, fine. So lots of verbs. Okay, we have seen earlier have plus third form, then we saw have been plus third form. What about have been plus fifth form? Let's have a look at that. We slowly go to that. Okay, first have plus third form. One example. Read out this sentence. I have taken a house on rent from my friend. I have taken, मैंने एक घर लिया है. मैंने दोस्त से किराए पर एक घर लिया है. दोस्त से लिया है, जिस दोस्त को हम पहले से जानते थे और पहले उस दोस्त का घर हुआ करता था, शायद जाते भी थे. ठीक है, I have been a guest in that house a few times earlier. मतलब मैं उस घर में मेहमान रह चुका हूँ कई बार. कई बार. पहले कई बार उस घर में मैं मेहमान रह चुका हूँ, जब मेरा दोस्त रहता था वहां पर. अब देखो, आई हैव टेकन, मैंने लिया है. आई हैव बीन, ओके, मैं रहा हूँ. ओके, सो हियर द थर्ड फॉर्म इज थर्ड फॉर्म ऑफ बी. ओके, immediately after that I can put a fifth form also, have been fifth form. Okay, just read out this. I have been living in house since last Monday. I have taken a rent, na? Taken it on rent. So since last Monday, I have been living. I am living, मैं रह रहा हूँ. I have lived, मैं रहा हूँ. I have been living, दोनों, मैं रहा हूँ और रह रहा हूँ. ठीक है, रहता आ रहा हूँ. So continuous, I am living is some action which is going on. I have lived is completed action. I have been living is action has started well in earlier, but yet it is continuing, still it is continuing. Okay, so that kind of situation is expressed with have plus been, which is the third form of be verb, helping verb, plus the fifth form of the actual verb. Okay, now we have learned quite a few tense structures, and let us see a comparison of many of them together. We take tea at 6 p.m. usually. मतलब आमतौर पे हम लोग 6 बजे चाय पीते हैं. आमतौर पर हम लोग 6 बजे चाय पीते हैं. Usually, okay, that is a regular practice. In present, okay. Today we have taken tea early. आज हम लोगों ने चाय जल्दी पी है. आज हम लोगों ने चाय जल्दी ली है. Have taken, completed action. Okay. During the winter we used to take tea at this time. ठंडी के समय हाँ, हम ठंड के लोग समय, इस समय चाय लेते थे. हाँ, ठंड के समय हम लोग इस समय चाय लेते थे. आज जल्दी लिया है, which is abnormal. Okay, ठंड के समय, विंटर के समय जो है यही रेगुलर टाइम हुआ करता था. ओके, हैबिचुअल पास्ट. अब पास्ट में एक पर्टिकुलर, एक खास दिन की बात. On the day of the earthquake we took tea around 5:30. ओके, वी टुक टी. भूकंप के दिन हम लोगों ने 5:30 बजे चाय लिया था. ये सिंपल पास्ट है, एक बार की घटना, नॉट यूज्ड टू, एक बार की घटना. वी टुक, उस दिन की बात बता रहे हैं. We had taken tea much before the tremors started. मतलब
कंपन शुरू होने के काफी पहले हम लोगों ने चाय ले ली थी। ये पास्ट के उस टाइम के रेफरेंस में बात हो रही है जब भूकंप का कंपन शुरू हुआ, और उसके पहले ही कंप्लीटेड एक्शन हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, उस दिन का चाय पीना खत्म हो चुका था ये कंपन शुरू होने के पहले, अर्थक्वेक शुरू होने के पहले। ओके, After tea, we had been chatting when we felt them first. मतलब उस समय हम लोग बात कर रहे थे चाय पीने के बाद। चाय के बाद हम लोग गप्पे कर रहे थे जब हम लोग पहली बार हम लोगों को कंपन महसूस हुआ। ठीक है, तो पहली बार कंपन महसूस हुआ से टाइम का रेफरेंस मिला सिंपल पास्ट में, और उस समय हम लोग काफ़ी पहले से शुरू करके कंटिन्यू कर रहे थे क्या करना, गप करना चाय के बाद। ठीक है, सो हैव प्लस बीन प्लस फिफ्थ फॉर्म, जो काम पास्ट में किसी अर्लियर टाइम पे शुरू हो चुका था और रेफरेंस टाइम तक कंटिन्यू हो रहा था जब ये रेफरेंस की घटना हुई। ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल कॉन्टेक्स्ट। ओके, The watchman will have been noticing their activities सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड। for quite some time before they will recognize him. ये वही चीज फ्यूचर में है। Whatever was done here in past, now that same thing is being done in future, and the same structure comes here also. The watchman at a future reference time, and what is that reference time? They will recognize him. Watchman को पहचानने के पहले काफ़ी देर से वॉचमैन उन लोगों के चाल चलन को ठीक से देख रहा होगा। ठीक है, खतरनाक है। द वॉचमैन विल हैव बीन नोटिसिंग, फ्यूचर टाइम पे विल, पहले से काम शुरू करके कंटिन्यू करता रहेगा वॉचमैन। हैव बीन नोटिसिंग क्या, देयर एक्टिविटीज, उनके क्रियाकलाप। ठीक है, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी देर से। कब, बिफोर दे विल रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि जब देखेंगे ये लोग, क्या रही ये तो वॉचमैन है, तब अपना क्रियाकलाप थोड़ा बंद कर देंगे ना, थोड़ा सावधान हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों वॉचमैन को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा? उन लोगों ने अपना क्रियाकलाप गड़बड़ सर्वर शुरू करने के पहले ख्याल नहीं किया कि वॉचमैन बैठा है, क्यों? Why will he not have been recognized earlier? ये ही जो है वो वॉचमैन है। ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा होता है। ठीक है, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, हैव बीन थर्ड फॉर्म। ओके, ये कौन से टेंस, कौन से वॉइस में हुआ? पैसिव वॉइस में हुआ। वाई विल ही नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, वो पहले क्यों पहचाना जा चुका नहीं होगा? कारण यह है कि प्लेन क्लोथ्स में था। ठीक है, ओके, सो यू शुड बी थॉरो विद दीज स्ट्रक्चर्स एंड नेवर कंफ्यूज, सो फॉर दैट यू नीड सम practice. Okay, the assignment is supposed to give you some practice on this. Right now we go into another very simple topic, which is halts and stops. At the end of quarter 1 we had a quick discussion on punctuation science. Now let us have another discussion which is also quick but a little longer than the earlier one. Full stop is the most obvious punctuation mark, and that typically comes at the end of an ordinary sentence, and there are other places also where it comes, where really you do not fully stop, and that is for abbreviations. Dr. APJ Abdul Kalam was the president. Okay. Nowadays there is a tendency to omit this dot. Okay. Nowadays there is it is quite often this practice that you write doctor and then just give space, no dot. Similarly APJ, that also nowadays runs well, but this is a classical rule. Comma you use for small pause, okay, to enumerate things or for some other purposes. First is to enumerate a list of nouns. The teams are from India, Pakistan and Nepal, so you put a comma here, okay, in this enumeration. Last one here, comma you can omit. Nowadays very few people put this comma.
Similar thing you can do not with nouns, but with adjectives also. Ashoka was a kind, wise, brave and powerful king. All these adjectives are actually qualifying king. Okay? You can do that for verbs also. The cruel caretaker scolds, beats and tortures the boys. 3 verbs listed. Okay? Very cruel indeed. So many bad things he does. Okay? Now, for a pause intended to convey the meaning more clearly, you can put a comma. This scheme is of great value, particularly for students. You have put the comma in order to drive home the point that this scheme is of great value in general, and then in particular you are putting students in focus, particularly for students. Others also it is of great value, but not so particularly, that is the idea. Okay? Sometimes a little segment of the sentence is demarcated by 1 comma before and 1 comma later, and in writing it is comma, in speech it is the pause. The pages which I marked need correction. This kind of phrase is quite often referred to as parenthetic phrase, as if this phrase is this clause actually in this case, which I marked, this part is as if under parenthesis within brackets. Then the normal sentence runs, the pages need correction. Which pages? Which I marked. Okay. So, the pages which I marked need correction. So, which I marked is separated by 2 pauses at 2 boundaries. Okay. Similar thing you do with this situation also. The criticisms, however mild, damage our mission. In fact, we say this is parenthetic, but this actually emphasizes this however mild issue, as if without that also the sentence was complete, but I made a point to mention that, that is even if it is mild criticism, take it seriously. Okay? Semicolon. Semicolon is a larger pause for more important business, okay? And quite often a lot of things with comma separation gets cluttered, and at the end a semicolon comes to demarcate this separation from others. Okay? We want social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality, amity, solidarity and unity among people. So, we want several things: justice of these kinds, liberty of these kinds and these things among people. Okay? Question mark, everybody knows, okay, at the end of a question. So, full stop, comma, semicolon, question mark, these are the most prominent ones, and of course, this note of exclamation is basically to mark a to make a comment which is showing wonder or great sorrow or something like that. This is dash, okay, punctuation dash. I talked to 4 of my colleagues, all of them fathers of young children. These 2 dashes are separating this all of them fathers of young children from the rest of the sentence about the curriculum. Okay. Hyphen is to connect 2 words together. Just now we saw words together without hyphen. Now, this is an example of with hyphen. A short term course is taught over a short term. Make note, here there is no hyphen. Okay. This short is adjective to term. Here short term together is adjective to the course. Okay. Colon is for listing. They needed 5 things: capital, land, labor, raw materials and market. Okay. You give this apostrophe to make possessive. Hari's book, boys, here S is already there in the plural. So, apostrophe comes after that alone, not boys's, to emphasize.
he will make no objection to the process you follow as long as the objectives are fulfilled. Okay? Object oriented, he demands result and he does not care about the process. Okay? So, these two words are emphasized. This is for reporting speech directly. Okay? She replied, open this, the flight is delayed by an hour, then close this, and here you put a comma typically, and this full stop does the double duty of completing the speech as well as completing the parent sentence. Okay? So, these are the typical punctuation marks which you need to use and use correctly. Okay? Okay. So, we stop here at this point and again continue later with session 28. Thank you.